A thinker, a scholar, an economist, and a gentleman politician, the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh is no more. He breathed his last at the age of 92 at the All India Institute of Medical Sciences in Delhi, where he was admitted just about yesterday. Top leaders, including the President, the Vice President, and the Prime Minister, and also Union Ministers, have paid their last respects to the former Prime Minister. All government programs scheduled for today have already been cancelled, a national mourning of 7 days already declared. And Dr. Manmohan Singh's last rites, the final journey, is going to be conducted with full state honours. An economist by training, Dr. Manmohan Singh held key positions in academia and government before he took on the transformative role of India's finance minister. The year, ladies and gentlemen, was 1991. This period marked a watershed moment in India's history as the country faced a severe balance of payment crisis, and Manmohan Singh, under the leadership of the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao, unveiled a series of bold economic reforms that dismantled the license Raj. It just opened up the economy to foreign investments. It liberalized trade policies. Have a look at the lives and times of the late Dr. Manmohan Singh. The day was 24th of July 1991. It was a day that changed the course of India's growth story. One that made every Indian dream big. And a large part of the credit goes to this man, a Congress veteran, Dr. Manmohan Singh. And on this day, the then Finance Minister presented his first ever budget, one that would be remembered for decades to come. The government by then was already going through testing times. Facing increasing oil prices and a fall in remittances from Indian workers owing to the Gulf War, the Indian state was on the verge of a sovereign default. At $6 billion, India had just enough forex reserves to support 2 weeks of imports. Harsh decisions had to be taken. The government, under the leadership of P.V. Narasimha Rao, then decided to devalue the Indian rupee and pledge gold holdings as immediate measure to shore up forex reserves. But it was a new industrial policy unveiled on the eve of the budget under the patronage of Manmohan Singh that proved to be the game changer. The policy relaxed provisions in Monopolies and Restrictive Trade Practices Act to facilitate easier entry and restructuring of businesses. The policy ended the public sector monopoly in many sectors. It also announced a policy for automatic approval of FDI up to 51%, as against the existing cap of 40% for foreign equity investments. These dramatic changes ended public sector monopoly in several sectors, except in those that were deemed critical to national security. These changes not only led to a steep upturn in the foreign goods entering Indian markets, but also a dramatic rise in foreign investment in the years to come. But the reforms didn't end there. Manmohan Singh took it further with multiple drastic changes to stall what seemed to be a crisis spiraling out of control for the country in 1991. Faced with a fiscal deficit, the budget increased corporate tax rates to 45%. The government also opened mutual funds to the private sector and relaxed investment norms for non-residents. These measures were followed by the introduction of a second trade policy package to boost exports and a package for developing small firms. Seeking immediate economic relief, he also applied for an emergency loan of $220 million to the IMF, which later proved to be critical in preventing a debt default for the nation. As the finance minister, Dr. Manmohan Singh took drastic measures which not only rescued the nation but also propelled India into rapid economic growth. As the nation mourns the loss of one of India's greatest minds, the country will forever remain indebted to the astute economist who changed the course of India's growth story. In fact, Prime Minister Narendra Modi, in his special address, has lauded the late
Dr. Singh's contributions, calling the former Prime Minister's life inspiration for all the Indians. The Prime Minister has said that Dr. Manmohan Singh will always be remembered as a reformist. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में
मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। Dr. Manmohan Singh, ladies and gentlemen, also had a great sense of humor. Now, during an interaction, the former Prime Minister explained that he was not an accidental Prime Minister, what a lot of people actually called him. But he said also an accidental Finance Minister in an absolute hilarious manner. Take a look at what he said. Narasimha Rao ji said, no, you go and get dressed up and come for the swearing in ceremony. So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. I went to the office as usual. Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, where are you? I said, I am in the UGC. He said, hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you? I said, I didn't take him very seriously. And Narasimha Rao ji said, no, you go and get dressed up and come for the swearing in ceremony. So that's how I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. And Narasimha Rao ji called me and I met him. I said to him that the country is in great difficulties. It requires hard thinking and very tough decision-making process to get the country out of the crisis that she was in. Narasimha Rao ji said, I don't understand all this, but we will give you a free hand with the understanding that if the things go well, we will all take credit. But if the things go wrong, well, you will be the scapegoat. I said, I accept that, but you will have to back me. And Narasimha Rao ji did back me on every stage. Now, the actor who essayed the role of Dr. Manmohan Singh in the film The Accidental Prime Minister has also paid his tributes to him. Here's Anupam Kher's tribute for Dr. Manmohan Singh. मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। He was a very, very, very wonderful person. And there are several leaders who've come out today paying their last respects to the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. While Lalu remembers his tenure with Dr. Manmohan Singh, Owaisi also says that the nation has lost its son. देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान
इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। Top NDA leaders have also paid their homage to the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh while remembering his contributions to India's economic growth story. It's a great loss for the nation. I offer my condolences to the family of Manmohan Singh ji. And he's always been an inspiration for youngsters also, especially in the parliament. We have seen that at that age, when he was a member, he was attending all these sessions. And also the contributions that he has made to the country, especially during the economic liberalization that the country went through, will always be remembered by each and every Indian. So it's a great loss for the nation. We all mourn with the family members. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे।